Hello guys, welcome to Gate Concept. Today we will discuss some question of power electronics that are asked in Gate 2022 examination. 2022 गेट 2022 एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन टुडे। और ये है फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। The voltage at the input of an AC-DC rectifier is given by Vt equal to 230 root 2 sin omega t, where omega equal to 2 pi into 50 radian per second. The input current drawn by the rectifier is given by It equal to 10 sin omega t minus pi by 3 plus 4 sin 3 omega t minus pi by 6 plus 3 sin 5 omega t minus pi by 3. The input power factor is. So the question is asking about the input power factor, and we know for calculating the value of input power factor, first of all we have to calculate the distortion factor, that is Z, that is the distortion factor, and the distortion factor is given by source current, fundamental source current, fundamental source current, RMS value of fundamental source current divided by RMS value of fundamental source current divided by total RMS source current, total RMS source current. So the current equation is given in this form. So what should be its fundamental value? That is maximum value is 10. So RMS will be RMS value will be 10 by root 2. This is fundamental. This is fundamental source current RMS value, that is 10 by root 2. Again, we have to calculate the total RMS current, source total RMS current. This is given by the equation, that is 10 by root 2 का whole square plus 4 by root 2 का whole square plus 3 by root 2 का whole square. So after solving this, we will get, that is 250 plus 16. So this will give 7.76 ampere. 7.76 ampere. So the distortion factor will be 10 by root 2 7.76. So this will give 0.9. That is 0.9. And we all know the distortion factor is 0.9. ये बहुत लोगों को याद भी रहता है. Distortion factor is 0.9. तो अगर किन्हीं को याद नहीं है तो इस प्रोसेस से वो इस प्रॉब्लम में निकालेंगे. That is equal to 0.9. Now next, the input power factor. So the input power factor will be G cos alpha. Distortion factor is 0.9, and alpha, the value of alpha is pi by 3. 0.9 into 1 by 2. This will give 0.4
0.45. 0.45. So the input power factor is coming out to be 0.45. So this is our right answer, 0.45. 0.45. So the next question is yeah. So this is our second question. This is our second question. So this question is very simple. A single phase full bridge diode rectifier fits a resistive load of 50 ohm from a 200 volt 50 hertz single phase AC supply. So if the diodes are ideal, then the active power in watts drawn by the load is. So this is again a very simple question. Single phase, we all know, in case of single phase full bridge. Now here diode is connected, diode rectifier. तो इस केस में जो RMS वैल्यू होती है, इस केस में जो RMS वैल्यू होती है, that is equal to Vm by root 2. So एक्टिव पावर पूछा गया है जो रेजिस्टिव लोड के लिए Vrms का होल स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, Vm का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर into R. So maximum value is Vrms by Vm equal to 1 by root 2. So maximum value will be root 2 into Vrms. So Vm will be 2 into Vrms का whole square into R divided by 2. That is Vrms का whole square into R. और Vrms given है, that is 200 और रेजिस्टिव लोड है 50 ओम. एक्टिव पावर, सॉरी, यहाँ पे Vrms का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होगा. Vrms का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाई आर और ये हो जाएगा 2 Vrms का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ आ जाएगा आर, यहाँ आ जाएगा आर. तो Vrms का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर.
डिवाइडेड बाई आर। तो एक स्लाइट मिस्टेक हो गया यहाँ पे, वी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, दैट इज 50. So this will give 800 watt. This is the active power. 800 watt is the right answer. So the final answer is 800 watt. Next question is, so the question is asking, consider an ideal full bridge single phase DCS inverter with a DC bus voltage magnitude of 1000 volt. The inverter output voltage VT shown below is obtained when diagonal switch of the inverter are switched with 50% duty cycle. The inverter feeds a load with a sinusoidal current given by IT equal to 10 sin omega t minus pi by 3 ampere, where omega equal to 2 pi upon t. The active power in watt delivered to the load is rounded off to nearest integer. तो इस केस में एक्टिव पावर पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग अगर ये एक स्क्वायर वेवफॉर्म दिया हुआ है, अगर हम इसकी फंडामेंटल की बात करें तो वोल्टेज का जो फंडामेंटल होगा, फंडामेंटल वेवफॉर्म वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। फंडामेंटल की अगर बात करें तो आउटपुट वोल्टेज को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज ए फोरियर सीरीज, दैट इज समेशन फ्रॉम 135 to infinity 4 VDC upon n pi sin n ओमेगा नॉट टी। तो आउटपुट वोल्टेज को हम लोग एज ए फोरियर सीरीज में हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो इसकी जो फंडामेंटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 VDC, फंडामेंटल मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज द फंडामेंटल मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 4 VDC डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। तो फंडामेंटल का मैक्सिमम आ गया। अगर फंडामेंटल की आरएमएस मुझे चाहिए तो फंडामेंटल के आरएमएस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा √2 से, इसे डिवाइड करना पड़ेगा √2 से, एंड द इनपुट वोल्टेज इज 1000, 4 into 1000 divided by 3.14 into √2. So fundamental RMS value is 4000, 3.4, तो ये आ गया 900 वोल्ट। तो फंडामेंटल की जो आरएमएस वैल्यू है वो है 900 वोल्ट। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, द एक्टिव पावर। तो हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमें जो करंट की इक्वेशन दी हुई है, हमारे पास जो करंट की इक्वेशन है ना, वो फंडामेंटल इक्वेशन दी हुई है, दैट इज 10 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। तो अगर मुझे फंडामेंटल करंट का इक्वेशन पता है, इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है द फंडामेंटल एक्टिव पावर। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द फंडामेंटल एक्टिव पावर। सो द फंडामेंटल एक्टिव पावर विल बी fundamental active power will be V01 RMS
into I01 RMS and the fundamental displacement factor, that is pi by 3. The fundamental RMS value is 900 volt. What is the fundamental RMS current? This will give Im by root 2 into cos 60, that is half. 900. What is the maximum current? Fundamental maximum current, that is 10 divided by 2 root 2. So this will give 3185.67 watt. So the fundamental active power will be 3185.67 watt. तो नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया है, तो नियरेस्ट इंटीजर में इसे हम लोग 3186 वाट भी लिख सकते हैं. Now the next question is, for an ideal AC-DC rectifier circuit shown in the figure below, the load current magnitude is 15 ampere and is ripple free, that is constant at 15 ampere. The thyristor are fired with a delay angle of 45 degree. The amplitude of the fundamental component of the source current in ampere is. तो अगर इस वेवफॉर्म, इस सर्किट डायग्राम को अगर हम देखें तो ये एक सेमी कन्वर्टर है, दो थायरिस्टर और दो डायोड लगे हुए हैं और एक आरएल लोड लगा हुआ है. ठीक. तो अगर हम इसकी वेवफॉर्म की अगर बात करें सोर्स करंट की, तो लोड करंट कांस्टेंट है. तो अगर हम सोर्स करंट की बात करें, ये 0 अल्फा पाई पाई प्लस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा. तो वेवफॉर्म कुछ इस तरह से दिखना चाहिए इन केस ऑफ सेमी कन्वर्टर सोर्स करंट का. ठीक. ये है प्लस आई नॉट और ये है माइनस आई नॉट. अगर इस पल्स की हम बात करें तो इस पल्स की जो लेंथ है वो दिख रही है पाई माइनस अल्फा. तो यहाँ पे जो पल्स विथ होता है 2d होता है, पल्स विथ, that is equal to 2d and 2d is pi minus alpha. So d can be written as pi by 2 minus alpha by 2. So this is the waveform for the source current. इस सोर्स करंट का वेवफॉर्म है. तो सोर्स करंट के वेवफॉर्म को हम लोग फोरियर सीरीज एज ए फोरियर सीरीज हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज आई एस इक्वल टू समेशन फ्रॉम n equal to 1 3 5 to infinity 4 I naught divided by n pi sin nd sin n omega naught t. तो यहाँ पे ये सोर्स करंट का मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सोर्स करंट का मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो हमसे पूछा गया है फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द सोर्स करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है. तो यहाँ पे
फंडामेंटल जो सोर्स करंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4I0 डिवाइडेड बाई पाई साइन डी। ठीक है, 4I0 बाई पाई साइन डी, दिस इज द मैक्सिमम सोर्स करंट। तो हमसे पूछा जा रहा है फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द सोर्स करंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सोर्स करंट, दैट इज 4I0 बाई पाई साइन डी, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4I0 डिवाइडेड बाई पाई और जो डी की वैल्यू है वो है पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। तो दिस विल गिव 4I0 डिवाइडेड बाई पाई cos alpha by 2, this is the maximum source current, 4 by pi into I naught। मैक्सिमम करंट जो है वो है 15 एम्पियर cos अल्फा बाई 2। तो 60 बाई पाई into the value of triggering angle is delay angle is 45 degree, तो cos 22.5 डिग्री। तो यहाँ से 17.65 एम्पियर। फंडामेंटल सोर्स करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 17.65 एम्पियर। 17.65 ampere. The next question and the last question from power electronics. The question is asking the steady state current flowing through the inductor of a DC-DC buck boost converter is given in the figure below. If the peak-to-peak ripple in the output voltage of the converter is 1 volt, then the value of the output capacitor in microfarad is rounded off to nearest integer. तो steady state current flowing through the इंडक्टर की जो वेवफॉर्म आती है इन केस ऑफ डीसी डीसी बक बूस्ट कन्वर्टर, उसका वेवफॉर्म यहाँ दिया हुआ है। ये इंडक्टर करंट का वेवफॉर्म है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये जो है इसकी इंडक्टर करंट की जो आईएल एवरेज आ जाएगी, आईएल एवरेज वो है आई नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी, where d is the duty cycle। तो यहाँ से इन केस ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर वी नो आईएल एवरेज इज आई नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी, and the current can be written as C dV upon dt in case of capacitor. So dV can be written as I dt divided by C, यही होता है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो ये रिपल बताएगा इन द आउटपुट वोल्टेज, रिपल इन द आउटपुट वोल्टेज, और I इंटू डी टी डिवाइडेड बाई सी. तो लेट अस सपोज द चेंज इन द वोल्टेज दैट इज द डेल वी. सी कांस्टेंट है कैपेसिटर जो कि मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है. एंड आई नॉट इज अगेन कांस्टेंट, आई नॉट इज अगेन कांस्टेंट. सो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, डी टी. सो द लिमिट ऑफ टाइम शुड बी फ्रॉम 0 से dt. Now change in the ripple in the output voltage is given as 1 volt, 1 by C, and I naught can be written as, that is IL average 1 minus D. What is IL average here? IL average is 12 plus 16, that will give the IL average. यहाँ से IL average आ जाएगा 16 plus 22 divided by 2, that is 14 ampere. That is 14 ampere. This is the IL average. So I naught can be written as IL average 1 minus D, और यहाँ dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, and this can be written as d into t. So 1 equal to IL average, that is 14, divided by capacitor C 1 minus d into t. So the value of capacitor will be 14 d 1 minus d t. 14 duty cycle. Duty cycle, the value of duty cycle is, the value of duty cycle will be, we know duty cycle is t on upon total time. So on time is given as 20 and total time will be 50. So the duty cycle is 2 upon 5. That is 2 upon 5, 1 minus 2 upon 5, and the total time period is 50 in microsecond. So 28 by 5, 3 by 5 into 50 in microfarad. So this will give 2, 3, 25, 168 microfarad. So the value of capacitor will be equal to 168 microfarad. This is answer. So the correct answer for this question will be 168 microfarad. So these are the questions that are asked in the GATE 2022 examination from power electronics. Okay, thank you.